Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Dear student, this lecture is connected with the previous topic because our topic of classification of contract is continue. In our previous class, we have done the classification on the basis of enforceability. The first one valid, the second one was void, and the third one was voidable, fourth one was unenforceable, and the fifth one was illegal or unlawful. And now our next heading is on the basis of formation. My dear students, on the basis of formation, the first type is express contract. What do you mean by express contract? Express means to tell something, to express something, or to communicate, whether in oral or written. Such contracts which are communicate orally are called oral contract, and such contract which are communicated in writing is called written contract, and both of them are comes under the definition of express contract because these are expressed by word. Now I hope it's clear to you. यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल में या रिटन में जस्ट किया जाए, अभी परफॉर्म नहीं किया जाए, लेकिन उसका इजहार किया जाए, उसको बयान किया जाए, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसे अभी सिर्फ बयान किया गया है या लिखा गया है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस की हद तक वो नहीं पहुंचा है, अभी प्रोसेस में है, तो वो फॉर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक्सप्रेस कंसीडर किया जाएगा। The next one is implied contract. It means understood, presumed, or unexpressed. These contracts are implied by law. An implied contract is one which has not shown by words written or spoken. It is observed by the act and conduct of the parties. आपने ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स देखे होंगे जो बज़ाहिर तो कॉन्ट्रैक्ट मालूम नहीं होते, लेकिन वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनीवेयर बाय ट्रेन और बस? जब आप कहीं जाते हैं ट्रेन से तो ऑब्वियसली आप अपनी टिकट लेते हैं और आप खुद ब खुद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो टिकट मिल रही होती है और अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से टिकट की पेमेंट भी करते हैं। अब इस तमाम सिनेरियो में हर वो शख्स खुद ब खुद ही इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस को फॉलो करता चला जाता है जिससे बाय ट्रेन कहीं जाना होता है। किसी शख्स का टिकट लेकर ट्रेन में बैठना उसे एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ले आता है। यानी वो शख्स जिसने टिकट लिया और वो ट्रेन में बैठा मीन्स ही हैज़ डन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम किसी मॉल में किसी शॉप पर जाकर कोई चीज़ पसंद करते हैं, हम ऑब्वियसली वहाँ से वो चीज़ परचेज़ करते हैं, देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और काउंटर पे जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को स्कैन भी करवाते हैं और फिर पेमेंट करते हैं और हम दानिस्ता तौर पर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें सिनेरियो से आप खुद ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस चीज़ को, इस एक्टिविटीज़ को, बिहेवियर की दूसरे के बिहेवियर को देखकर आपने किस तरह से इसको डन करना है और उसके लिए कोई आपको एक्सप्रेसली नहीं कहता और ना ही कोई कन्वेंस करता है। आप खुद ब खुद उस सिनेरियो में खुद को ले जाते हैं और वो चीज़ परफॉर्म करके उस पूरे सर्किल को फेस करके आप वापस आ जाते हैं। ये चीज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू about implied contract. When all the things are understood and no need to communicate, words are not required to communicate, it is understood by the behavior or conduct of the parties, are called implied contract. Can you think some other example? Okay, I have another example, another very simple example of implied contract. You must have seen many persons who are sitting on the roadside having shoe polish material. What happens is they don't actually call you out. No. What you do, you just go to there, put your foot up on their desk
and they start polishing your shoes. Did you notice कि उन्होंने आपसे कहा हो कि आप आएँ और जूते पॉलिश कराएँ? नो, यू अज्यूम्ड बाय द बिहेवियर। आपने उसको खुद ही देख आपको अंदाज़ा है कि ये सब जो लाइन से बैठे हैं या कहीं भी जो जूते पॉलिश करने का सामान लेके बैठे हैं, और हम अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके जूते को पॉलिश करेंगे और आप उनको पेमेंट करेंगे और सीधे चले जाएंगे, और इन सारी बातों में आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी अंडरस्टूड सिचुएशन होती हैं वो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती है। नाउ अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मेशन, आवर नेक्स्ट टाइप इज कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. Quasi contracts are just like a contract or similar to a contract, but these are not actually a contract. ये दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन से नहीं बनाए जाते, क्योंकि मोस्टली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से बनाए जाते हैं, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं होते जिसमें दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन या विलिंगनेस शामिल हो. Because in this contract, parties don't make it intentionally. These contracts just created in the absence of law, just to avoid unjust practice and maintain peace and harmony among the society. Let's go through the definition. A constructive or quasi contract is a legal obligation between the parties involved in a dispute in the absence of a prior obligation between the parties. This prevents unjust enrichment, while a normal contract has different elements and requires the parties to be in the agreement. A constructive or a quasi contract has no such requirements and is usually invoked for the restitution. A constructive contract is also known as a quasi contract. देखें, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन ज़रूर होता है, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन तो होता है लेकिन अग्रीमेंट्स नहीं होता, यानी दो पार्टीज़ की कंसेंट नहीं होती. वैसे तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ. फ़र्ज़ जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स. फाइंडर ऑफ गुड्स वो होता है जिसको कोई सामान मिलता है, किसी का खोया हुआ सामान किसी ऐसे शख्स को मिल जाए जो जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो शख्स जिसे वो मिलता है वो फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. फ़र्ज़ करें अगर ऐसे किसी शख्स को कोई ऐसा सामान मिलता है, और फ़र्ज़ करें कोई फ़ाइल मिल जाती है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह होते हैं, और वो शख्स खुद से इंटेंशनली ख़ुद को एक कॉन्ट्रैक्ट में ले आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मुझे ये सामान उस रियल ओनर को वापस करना चाहिए. और जब वो देखता है कि उसका एड्रेस तो किसी और सिटी का है और वहाँ तक जाने के लिए उसे काफ़ी चार्जेस लगेंगे, लेकिन फिर भी वो ये बात मानता है, फिर भी वो इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि बेशक मुझे एक दिन लगे या टाइम लगे, पर मुझे उसके रियल ओनर तक ये चीज़ पहुंचानी है. लिहाजा वो जितने भी चार्जेस खर्च करता है और उस रियल ओनर तक पहुंचता है, और उसको वो उसकी असल चीज़ पहुंचाने में वो शख्स उसको जो पेमेंट करता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो चीज़ उसको मिल जाती है उसके रियल ओनर को और वो उसे पे करता है, तो इस तरह की जो सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की बर्थ होती है, वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन में आते हैं. This is the third heading on the basis of which the contract are classified, that is performance. Number one is unilateral. Unilateral means a promise in exchange for action. When performance of one side is pending, it is called unilateral contract. It remains to be performed from other side. We can understand this contract by the help of very simple example. फ़र्ज़ करें कि आपको किसी दूसरे कंट्री जाना है, जिसके लिए आप एक टिकट बाय करेंगे एयरपोर्ट से, लेकिन
आपकी तरफ से तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने टिकट ले ली, पेमेंट कर दी, लेकिन अभी दूसरे साइड से इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना बाकी है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यूनिलेटरल में आएंगे, मींस परफॉर्म्ड बाय वन साइड एंड वन साइड इज पेंडिंग। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप किसी मॉल पे जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं और आप अपनी पसंद की कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं कि ये ड्रेस है, इसकी ये साइज़ चाहिए, और वो ड्रेस उस वक्त तो नहीं होता, लेकिन शॉपकीपर आपसे कहता है कि आप यूँ करें कि इसके एडवांस पेमेंट दे दें, रिसिप्ट ले लें और आपका ऑर्डर आपको कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूनिलैटरल में आते हैं, जिसमें वन पर्सन has done his part of performance but the other one is remaining. Now I hope you have clear by this example. Now second one is bilateral. Bilateral means a promise for a promise. Unilateral में क्या था? A promise in exchange for action. But here is something different. यहाँ पर एक promise के लिए एक promise किया जाता है but not performed. यानी दो लोग प्रॉमिस करते हैं, अपना इंटेंशन शो करते हैं कि अगर आप अपनी कार मुझे सेल करते हैं इतने पैसों में तो मैं आपको ये पेमेंट कल पे करूँगा। दूसरा शख्स भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है अगर आप मुझे इतनी डिमांड पे कर देते हैं तो कल इस कार की चाबी आपकी होगी। इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस। बायलैटरल कंडीशंस में दोनों साइड्स की इंटेंशंस और प्रोमिसेस की वैल्यू होती है। अभी रिटन में कुछ नहीं होता, डन कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोमिसेस डन होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती। Dear students, as you know that we are studying classification of contract under the heading of performance. तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि फॉर्मेशन अलग चीज़ है और परफॉर्मेंस अलग चीज़ है। When you form a contract, it is half process. But when you actually perform, that is completes the contract. फ़र्ज़ करें अगर हम किसी राइस मिल से कुछ चीज़ मंगवाते हैं या फ़ोन करते हैं कि हमें फ़लाँ कैटेगरी की चावल की इतनी क्वांटिटी चाहिए और हम इसकी पेमेंट आपको कुछ दिन के बाद करेंगे। तो ये क्योंकि एक पार्टी ने ऑर्डर किया है और ये जो ट्रांज़ैक्शन है, इस ट्रांज़ैक्शन की बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूटरी है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसकी इंटेंशन शो हुई है, वो भी वन पार्टी की साइड से। तो दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और दीज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू. Okay, let's go through the definition. An executory contract is a contract that has not yet been fully performed or fully executed. It is a contract in which both sides still have important performance remaining. यानी सिर्फ एक साइड का इंटेंशन होता है, परफॉर्मेंस तक अभी बात नहीं पहुंची होती. Now, dear student, this is our last type of contract, that is executed contract. Executed contracts वो होते हैं जो हर तरह से complete हो चुके होते हैं, जो ended हो चुके होते हैं, discharge हो चुके होते हैं. When both the parties had done their part of promises, when both the parties have performed the contractual obligations, when both the parties have fulfilled their promises, these type of contract has set to be executed because nothing is remaining to be done. Okay, let's go through the definition. An executed contract is an agreement or contract between two or more parties that has been signed and is binding to all parties involved. It is a fully implemented contract. So this was the definition. I hope it's clear to you. फिर भी आपके कोई सवालात हो या इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन टाइप करें. आई विल कलेक्ट ऑल योर क्वेश्चंस एंड फॉर्म अ सेपरेट लेक्चर ऑन इट.
I know business law is very different subject and little bit difficult as well, but if you will listen all the lectures completely और अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी. God bless you all. Goodbye. Thank you very much.